Yeah, good morning, everyone. In this session, we will discuss about federated learning, basically the difference between FL and ML, and some important facts that is going to be very important for you. So let me share the screen for you. Okay, so federated learning, uh, we'll cover what is federated learning, how FL works, right? And then some key important algorithms. Okay, now let's first come. What is federated learning? Federated learning क्या है? तो federated learning is a machine learning paradigm that enables training models across multiple decentralized devices or servers without ever sharing the raw data. तो जो difference है यही पे है. ठीक है, कहाँ पे है? Training the model across by sharing the data from different decentralized devices or servers without ever sharing raw data. Raw data हम share नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, training we are doing from different decentralized devices or servers. Okay, instead of sending data to a central server, it brings the model to the data. ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मल ट्रेडिशनल एमएल में डेटा को सेंड करते हैं कोई सेंट्रल सर्वर में, बट यहाँ क्या होता है, एफएल ये मॉडल को सेंट्रल डाटा के पास ले आता है. सो वी आर नॉट सेंडिंग द डाटा, in fact we are bringing the model to those data, right? Now each participant, we call client, trains a local model on their own data. Only the model updates gradients or weights that are shared with a central server, which aggregates them into a global model. And this process repeats over many rounds until the global model convergence. हम जानते हैं कि एमएल डीप लर्निंग कहीं पे भी मॉडल को कन्वर्जेंस करना हमारा गोल होता है, राइट? जब यहाँ मॉडल अपडेट होता है, ओके, ओनली द मॉडल अपडेट्स ग्रेडियंट्स. हम क्या अपडेट करते हैं एग्जैक्टली? ग्रेडियंट, वेट्स, राइट? वेट्स अपडेट करते हैं. तो ये हम सेंट्रल सर्वर के साथ शेयर करते हैं, right? Each participant trains a local model on their own data के ऊपर ट्रेन किया. उसके बाद only the model updates the gradients and weights are shared with a central server that aggregates them into a global model. ये जो भी अपडेट हुआ है, जो weights है, ये सब हम शेयर कर रहे हैं, रॉ डेटा हम शेयर नहीं कर रहे हैं, right? And this process repeats over many rounds until the global model converges. Now, originally it was proposed by Google in 2016, and it was designed to train keyboard prediction models on mobile devices while preserving user privacy. ठीक है, originally Google ने इसको propose किया था in the year 2016. अ, तो उसके बाद क्या हुआ, इसको हमने जो की गूगल का जो कीबोर्ड प्रेडिक्शन मॉडल्स है, इसको ट्रेन कराने के लिए हमने यूज किया. ठीक है, तो ये एक इनका प्रॉपर वे है जिसमें हम बोल सकते हैं डेटा प्राइवेसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, राइट? सो ट्रेन मॉडल्स अक्रॉस डिसेंट्रलाइज्ड डेटा विदाउट एवर शेयरिंग द रॉ डेटा. तो ये इनका मेन मोटो है. We are training the ML models across these centralized data without sharing the raw data. So privacy by design, the data never leaves the device. तो ये दो तीन पॉइंट आप लोगों को याद रखना है. हम डेटा शेयर नहीं कर रहे हैं. We are training the models across decentralized data without even sharing the raw data. And our main motto is that privacy by design, the data never leaves the device. Okay, now why we need this? Why we need this federated learning? Privacy, data sovereignty, efficiency, these are the core drivers of federated learning. अभी तक आप लोगों को समझ में आ गई जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम दे रहे हैं डेटा प्राइवेसी के ऊपर, sovereignty के ऊपर, right? Now traditional ML requires centralized
centralizing all data on a single server, a major privacy risk। आप सर्वर में अपना डेटा लोड कर रहे हो, वो उसमें ऑब्वियसली प्राइवेसी रिस्क होता है। नाउ federated learning addresses this by training models locally on user devices, sharing only the updates, that is say gradients, and never the raw data। जब ट्रेन होता है लोकल डिवाइस में, लोकल डाटा को लोकल डिवाइस में ट्रेन करा के जो भी अपडेट, जैसे कि ग्रेडियंट वेट्स हमने अपडेट किया, ये चीज हम शेयर करते हैं सेंट्रलाइज सर्वर के साथ, रॉ डाटा को नहीं। राइट। प्राइवेसी प्रिजर्वेशन, सेंसिटिव डाटा, मेडिकल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पर्सनल मैसेजेस, they never leaves the device, ensuring user privacy by design। Right. Then data sovereignty, organization and individuals retain full ownership and control of their own data, complying with the regulations like GDPR and HIPAA, right? तो जिसमें डाटा सॉवरेंटी रहता है, हमारे पास या तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है यूज कर रहे हैं उनके पास डाटा का फुल ओनरशिप रहता है। देन रिड्यूस कम्युनिकेशन कॉस्ट, only the compact model updates are transmitted instead of large raw data set। सिर्फ अपडेट को हम शेयर कर रहे हैं, राइट। तो इससे क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन कॉस्ट कम होगा, क्योंकि अगर आप आपने अगर ट्रेनिंग किया होगा इसमें क्या बोलते हैं डीप लर्निंग का कोई भी मॉडल, तो आप जानते हो कि डेटा को हम ट्रेन कराने में कितना हमें कॉस्ट लगते हैं, कितना टाइम भी लगते हैं, राइट। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ सिर्फ जो चेंजेस हैं अपडेट हैं वही चेंज हम शेयर करते हैं। So it's significantly lowering the bandwidth uses. Then leveraging load data means FL enables learning from data that cannot be pulled due to legal, कॉम्पिटिटिव और लॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स, राइट। ये वो सारे डेटा से लर्न करते हैं जिसको हम उस कॉन्स्ट्रेंट के कारण हम शेयर नहीं कर सकते, राइट। तो अनलॉकिंग इनसाइट्स फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्सेस, तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो गूगल्स जीबोर्ड कीबोर्ड, ओके, दैट इज, क्योंकि ये गूगल ने ही 2016 में प्रपोज किया था, यू कैन सी, राइट। एंड ये कई कीबोर्ड प्रेडिक्शन मॉडल के हिसाब से प्रपोज किया था। तो गूगल कीबोर्ड keyboard launched next word predictions from millions of phones without ever uploading your typed messages to a central server। ये एक एग्जांपल है। Now FL architecture overview, let's see, you can see here, right, ये डायग्राम को ध्यान से देखना। स्टेप वन, मॉडल इनिशियलाइजेशन, कुछ हम कर रहे हैं सपोज, जैसे कि ये जो पर्सनल ओनर्स मतलब इंडिविजुअल ओनर्स का फोन है, इसमें कुछ लर्निंग हो रहा है, और जो अपडेट है W1 से ये यहाँ पे W2, और ये पर्सन के लिए WN, लाइक दैट, इनको हम क्या कर रहे हैं, लोकल मॉडल ट्रेनिंग के बाद जो अपडेट मिला है उसको अपलोड कर रहे हैं। देन ग्लोबल मॉडल एग्रीगेशन एंड अपडेट, राइट। तो ये जब मॉडल इनिशियलाइज हो गया, लोकल मॉडल ट्रेनिंग एंड अपलोड हो गए, ये W1 W2 अप टू W, ये सब हमने अपलोड कर दिया, तब जाके ग्लोबल मॉडल एग्रीगेशन एंड अपडेट होता है। और एक इमेज देख सकते हो, क्लाइंट वन, क्लाइंट टू, आपसे क्लाइंट एंड क्लाइंट्स आर देयर, लोकल मॉडल ट्रेनिंग एंड अपडेट, local model 1, local model 2, local model n. Then we have global model aggregation and update in the central server. So this is the aggregated model. So model को initialize किया, इतने सारे clients हैं, खुद का model में training and update हुआ है, उसके बाद जो भी अपडेट मिला है वो उन्होंने सेंट्रल सर्वर में अपलोड किया है, और सेंट्रल सर्वर में आपका ग्लोबल मॉडल एग्रीगेशन एंड अपडेट हुआ है, राइट। तो आप देख सकते हो जो भी नॉर्मल जो मशीन लर्निंग है, यहाँ पे आप यू कैन सी हियर मशीन लर्निंग, federated learning and edge computing, heterogeneous devices। Then one more diagram you can see that this is the centralized machine learning, हमारा डाटा पूरा सेंट्रल सर्वर में जाके मॉडल ट्रेन होता है। बट वाल federated लर्निंग में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो लोकली मॉडल को ट्रेन करके जो भी अपडेट है वही अपडेट जाके हम सेंड करते हैं सर्वर में, और सर्वर में वो क्या होता है, ग्लोबल मॉडल जो भी रहेगा उसको ट्रेन एग्रीगेट किया जाता है, राइट।
So that's how this federated learning works. Okay, so yeah, इसका components है central server aggregates model updates using Federated algorithm. This okay, and it maintains global model which adds devices like mobile phones, ID sensors, hospital trains a local model on private data. Then local model like it identical architecture to global model train on a device specific data for any box. Aggregation process server collects gradients or weights. It applies weighted averaging, broadcast updated global model back to clients. Then इसका अगर आप ये देखोगे आर्किटेक्चर फ्लो सर्वर डिस्ट्रीब्यूट ग्लोबल मॉडल क्लाइंट्स ट्रेन लोकली अपलोड द अपडेट सर्वर एग्रीगेट्स एंड रिपीट तो ये होता रहेगा जब तक कन्वर्स नहीं हो जाए राइट कीवर्ड यही है कि रॉ डेटा नेवर लीव्स द डिवाइस ओनली द मॉडल पैरामीटर्स आर ट्रांसमिटेड so that's it for this class we'll continue with the next class we'll learn few more about this predicate learning thank you